Hello students, today we are going to learn lesson number 6 Early Kingdoms part 4. In previous period we have learnt about Nanda dynasty. Nanda dynasty started from 364 BC to 321 BC. We do not know much about the Nanda dynasty except that the last ruler Dhanananda was a cruel king. He was very unpopular with his subjects. Chandragupta Maurya took advantage of his unpopularity and occupied the throne of Magadha in 321 BC. ओके सो हमें नंदा डायनेस्टी के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है एक्सेप्ट कि हमें सिर्फ इतना पता है कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था धनानंदा और जो कि बहुत ही क्रूएल किंग था ओके और वो अनपॉपुलर था उसकी हरकतों से और इस अनपॉपुलरिटी का फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था और मगध जो है ये वहाँ का सिंहासन इन्होंने हासिल किया था 321 BC में। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रीवियस पीरियड में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। ओके सो अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड अटैक्ड Northwest India in 327 BC. Alexander marched from Macedonia in Greece to northwest India. He conquered all the countries that come on his way. His campaign lasted for 2 years. The famous battle was fought with Porus, whose kingdom lay between the Jhelum and the Chenab. He was unable to continue his march as his soldiers were probably tired after fighting for 10 years. ओके तो अलेक्जेंडर जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट ये ग्रेटेस्ट कॉन्करर कहलाता है वर्ल्ड का क्योंकि इन्होंने अटैक किया था भारत पर आक्रमण कब किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण किया था इन 327 BC में अलेक्जेंडर की इस मार्च की शुरुआत हुई थी मैकेडोनिया से इन ग्रीस टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक और जितनी भी कंट्रीज उसके रास्ते में आए उनको वो जीतता चला गया और ये जो अभियान है उसका लगातार 2 साल तक चला। एक फेमस बैटल हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। पोरस का किंगडम जो था वो झेलम और चिनाब के बीच में था लेकिन उस समय जब लड़ाई हो रही थी तो अलेक्जेंडर जो था अनेबल हो चुका था कंटिन्यू हिज मार्च से बिकॉज उसके जो सोल्जर्स जो थे सैनिक जो थे वो टायर्ड हो चुके थे आफ्टर फाइटिंग फॉर 10 years. Okay, then after Alexander the Great, we learnt about taxation in previous period. Taxes on crops were the most important. The tax was fixed at 1/6 of the produce. This was called bhaga or a share. Taxes were also levied on goods that were bought and sold through trade. Hunters and gatherers had also to provide the produce of the forests to the king. Herders were also expected to pay taxes in the form of animal produce. Taxes were paid by craftspersons as well. They could be in the form of labor. For example, weavers may have had to work for a day every month for the king. Since most people were farmers, agriculture was the main source of revenue. Farmers had to give 1/6 of their produce to the king. Others, such as potters, carpenters, and weavers, also paid tax either in cash or in kind or by offering free service to the king. ओके तो टैक्सेशन के बारे में हमने पढ़ी थी कि टैक्सेशन में जो फार्मर्स जो होते थे उनको अपने प्रोड्यूस का 1/6 जो है हिस्सा जो है देना पड़ता था राजा को और अदर्स जो थे जैसे पॉटर्स होते थे कारपेंटर्स और वीवर्स जो होते थे उनको पेड करना पड़ता था टैक्स इन कैश और इन ए काइंड और बाय ऑफरिंग फ्री सर्विस टू द किंग। ओके हर्डर्स और गैदरर्स जो होते थे दे आल्सो they had to provide the produce of forest to the king. Okay, and जो टैक्सेस जो होता था जैसे
अभी अभी आपको बताएं कि जैसे पॉटर्स और कारपेंटर्स जो है ये महीने में एक बार तो एक दिन की फ्री सर्विस किसके लिए करते थे, राजा के लिए करते थे। ओके, एंड टैक्सेस जो होता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। ओके, taxes were very important as the king depended on them to his empire for collecting taxes. Tax collectors were appointed. Okay, after that we learnt about villages and towns. So most of the people lived in villages in the 6th century BC, but from 600 BC onwards, the growth of towns started taking place. Towns were the centers of trade and commerce. After that, we learned about society. So, society was divided into four distinct groups or varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. The Brahmins performed religious functions and sacrifices. The Kshatriyas were warriors and fought wars. The Vaishyas cultivated and tilled the land, and the Shudras served the three upper groups. Apart from these, there was a fifth group, the untouchables. They were required to perform unclean jobs. Okay, समाज जो था उस समय का वो फोर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और वर्णास में डिवाइडेड था। फोर डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण परफॉर्म करता था रिलीजियस सेरेमनी को। क्षत्रिय जो होते थे वो वॉरियर्स होते थे और उनका काम होता था वार्स में फाइट करना। वैश्य जो थे वो कल्टीवेट करते थे लैंड को या व्यापार करते थे। और शूद्र जो थे, ये तीनों अपर जो ग्रुप्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सर्विस करता था। ओके, उसके बाद इन चारों ग्रुप को छोड़ के एक फिफ्थ ग्रुप भी बना जिसको अनटचेबल्स कहा गया। अनटचेबल्स में आने वाले जितने भी, जैसे अनटचेबल ग्रुप में आने वाले, वर्ण में आने वाले जो लोग रहते थे उनको अनक्लीन जॉब्स करना पड़ता था। ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रेड। So King Bimbisara had built a network of roads and bridges. This helped in increasing trade. Besides road, trade was carried through rivers too. Supara and Brooch were important seaports. The main articles of trade were silk, muslin, perfumes, and ivory. Till this time, trade had been carried through barter. With the introduction of silver and copper punch marked coins, trade got a boost. ओके, तो बिम्बिसारा जो राजा था उस समय, उन्होंने रोड बनाई थी, ब्रिजेस बनाए थे जिससे नेटवर्क फैला था और इस रोड्स और ब्रिजेस के थ्रू जो है ट्रेड में, व्यापार में इंक्रीज हुआ था, व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी। रोड और ट्रेड जो था ये वो कैरी होता था रिवर से भी। सोपारा और ब्रोच उस समय के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट थे और सी पोर्ट से भी व्यापार होते थे। मेन आर्टिकल्स जो था ट्रेड का वो था सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी। ओके, till this time trade had been carried through barter. Okay, and with the introduction of silver and copper punch marked coins, trade got a boost. Then we will learn about religion. Brahmanas had become very powerful by this time. They were expected to study and teach the Vedas. They assisted the king in religious ceremonies. Varna's system gradually became rigid. People were looking for a religion which was simple and gave them equal opportunities. This led to the popularity of two religious sects, Buddhism and Jainism. ओके, ब्राह्मणास जो थे रिलीजन, धर्म के बारे में, तो ब्राह्मण जो थे ये बहुत ही पावरफुल हो गए थे उस समय और दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ओके, वो स्टडी भी करते थे और
टीच भी करते थे वेदास की, और उन्हें वो असिस्टेड भी करते थे किंग्स को, और रिलीजियस सेरेमनीज में वो परफॉर्म करते थे किंग्स के दरबार में। वर्ण सिस्टम जो था ये धीरे धीरे रिजिड होते गया, कठोर होते गया। लोग जो है रिलीजन के लिए रिलीजन को खोजने लगे, विच वॉज सिंपल एंड गेव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और इससे जो है दो रिलीजियस सेक्ट्स पॉपुलर हुए थे उस समय, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ओके, तो लोग जो पीपल वर लुकिंग फॉर ए रिलीजन विच वॉज सिंपल एंड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। सो these lead to the popularity of two religious sects, Buddhism and Jainism. Okay, after that we will learn about changes in agriculture. Agriculture was the main occupation. The use of iron helped in surplus production. Iron plowshare replaced the wooden one. Transplantation of paddy also began to increase its production. Generally, the dasas and dasis and landless agriculturists, kamakaras, worked on the field. More and more lands were cultivated which could support a large population. The people made earthen pots. Some were grey and some red in color. One special kind of pottery made at this time was painted grey ware. As the name suggests, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometrical पैटर्न। ओके, एग्रीकल्चर में चेंजेस हुआ था। एग्रीकल्चर जो कि उस समय का मेन ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर में आयरन का यूज़ होने लगा प्रोडक्शन इन सरप्लस प्रोडक्शन के लिए। आयरन प्लोसेयर का जो है वो रिप्लेस्ड, आयरन प्लोसेयर जो है उसका यूज़ करने लगा वुडन वन की जगह पर। ट्रांसप्लांटेशन जो है पैडी का ट्रांसप्लांटेशन जो था वो भी उसकी भी शुरुआत हो गई थी और इंक्रीज़ हुआ था उसके प्रोडक्शन में। जनरली जो थे दासास और दासीस और लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो वर्क करते थे कहाँ पर, खेतों में। मोर एंड मोर लैंड्स वर कल्टिवेटेड विच कुड सपोर्ट ए लार्ज पॉपुलेशन। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टिवेटेड करने लगे, और लोग जो थे वो अर्दन पॉट जो है वो बनाने लगे। कुछ जो है ग्रे और सम रेड कलर के पॉट का यूज़ करने लगे। स्पेशल काइंड ऑफ पॉटरी बनने लगी जिसे पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। और जैसे कि नेम सजेस्ट है, ग्रे पॉट्स जो है वो पेंटेड और अलग अलग डिज़ाइन में बनने लगा, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न में। Okay, so student, we have completed we have finished this lesson here. Okay, केस स्टडी दी गई है यहाँ पर। ओके, द वाजी कॉन्फेडरेसी के बारे में एंड एट द सेम टाइम के बारे में आपको ये खुद ही पढ़ना है। ओके, देन I hope you understood. Okay, bye.